from grade 1. How are you all? Hope you all will be fine. Grade 1. Last time we learned half and quarter. How to make half and quarter with the help of an activity. Today we will do page 83 on your book. We will color the half of each picture. Here we are given some pictures. Okay. According to the instruction, we will shade the given pictures parts. This is a circle. It is divided into two equal parts. And they have asked us, हमें बोला है कि हमने half part of a picture shade करना है. So half parts first ये दो two parts में divided था. We will shade only one part of the picture. तो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगी? द फ्रैक्शन विल बी वन पार्ट इज शेडेड फ्रॉम टोटल टू इक्वल पार्ट्स. टोटल कितने पार्ट्स बन गए थे? टू, एंड वन पार्ट इज शेडेड. सो द फ्रैक्शन विल बी 1/2. 1/2 मीन हाफ. ओके. इन द नेक्स्ट पिक्चर दिस इज द स्क्वायर अगेन डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वी विल शेड द वन पार्ट ऑफ स्क्वायर. एनी वन पार्ट, कोई भी पार्ट को आप एक कम्प्लीटली शेड कर दें. सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? वन पार्ट इज शेडेड फ्रॉम टोटल टू इक्वल पार्ट्स. टोटल कितने पार्ट्स थे? टू इक्वल पार्ट्स थे. वन वी शेडेड बिकॉज वी हैव टू कलर हाफ ऑफ ईच पिक्चर. सो हाफ मीन वन पार्ट ऑफ ईच पिक्चर. द स्टार इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. वी हैव टू शेड द वन पार्ट ऑफ द स्टार. ओके. सो दैट वी शुड मेक द फ्रैक्शन half. It will be half. Again the next picture, shade the half of this triangle. Okay, in this way you have to shade all the pictures half part. And come to the question number 2. Which picture is divided into equal parts? You can see here some pictures. This is the ball. Is the ball divided into two equal parts? Yes. This white line separates two equal parts, the first and the second, two equal parts. So you can say this is divided into two equal parts. Yes, the butterfly is also divided into two equal parts. Both sides are equal. So we can say equal parts. What about this biscuit cookie? It is not divided. It is only some part of it has been eaten. Okay. It's not half. If you eat till this line, then it would be the half of this biscuit, this cookie. Okay. So it is not divided. So you have to cross over it. Okay. Now come to this donut. Is it divided into two equal parts? Yes. You can see it is divided into two equal parts. So we will tick it. Next. The pizza, it is not divided into two equal parts. The last one picture is also divided into two equal parts. So we will tick it. Now come to the next page. Now what you have to do, guys, here on this page, you can see here 3.a, color quarter of each picture. What is the quarter? Each part of a circle. You can see here this is the one hole. जब circle complete होता है that is called one whole circle. When we divide it into, जब हम इसके center में line draw करेंगे तो इसके ये two parts में divide करें. Again we will draw another line, तो four equal parts बन जाएंगे. जब हम किसी भी circle और square को four parts में divide करते हैं, that time जो सर्कल जो होता है वो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और ईच पार्ट क्या कहलाता है? 1/4. ईच पार्ट जो होता है वो क्वार्टर कहलाता है. फोर पार्ट्स हैं. सो इसका मतलब होता है वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स. ओके. सो टोटल कितने हैं? फोर हैं. ईच पार्ट इज़ 1/4 1/4 1/4. ठीक है. क्वार्टर. सो फोर क्वार्टर मेक्स वन होल. Now you are given here an activity. You have to perform this according to the instruction. Color quarter of each picture. So this is circle. It is divided into four equal parts. So you have to color only quarter. Quarter mean
one part out of 4 equal parts. So we will shade only one part. जब one part shade हो जाएगा, it means quarter is shaded from 4 equal parts. Total 4 हैं जिनमें से only one is shaded है. Again in the next one, the square is divided into 4 equal parts and we will shade only one to make it quarter. Quarter mean 1 by 4. 1 by 4 का मतलब होता है all grade 1 all please repeat with me, one part out of 4 equal parts. Quarter means one part out of 4 equal parts. Okay, so you have to shade one part of all these pictures. Thank you grade 1.